We are determined for much longer than 16 days. Why we are on this fast has a serious reason. कोई 15 दिन, कोई 16 दिन इतने इतने बैठ करके भूख हड़ताल पे बैठे हुए, सिर्फ पानी पी रहा है, सिर्फ पानी पी करके. Two different elections which they won with heavy majority only because they made these promises. But later they backtracked, dilly-dallied for 4 years and then finally clearly declined. But we still have hope that good sense and conscience will awaken in them. Madonna tenei ca juxtă royale. Ca la musique man royale का दोनों madonna जा कुछ पिक्चर सोचा स्पेरा la musique man royale. सर आप लोग रोज इधर पे प्रोटेस्ट में आ रहे हैं जी. आगे का रास्ता क्या है? अभी हम आगे की रास्ता यही हम उम्मीद लेकर के पूरे लद्दाख की हर एक गांव से लोग यहाँ आकर के आज 16वें दिन चला हुआ है, जिसके अंदर हमारा नंबर 1 पर रोलेक्स अवार्ड सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं उनकी साथ देने के लिए. बाकी सारे भी कोई 9 दिन, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन अनशन पे बैठ करके, भूख हड़ताल पे बैठ करके. इतना जो आज बेशक थोड़ा सा मौसम ठंडा मतलब ठीक है, इससे पहले बहुत मेहनत में थे, काफ़ी मेहनत में, उसमें भी सारे ने अपने मुसीबतें जलते हुए उम्मीद रख करके. और मैं खुद अगर अभी कहूँ तो मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ. आज हमारा एक संगठन आया था यहाँ पर उनके पक्ष में बातें करने के लिए, उनके पक्ष में हूँ बोलने के लिए. आज हमारे ये लद्दाख की स्थिति देख करके हम बहुत अफसोस होता है. मैं अपने यहाँ के कोर कमांडर जी से और वहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से और डिफेंस मिनिस्टर से मेरा रिक्वेस्ट है, एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, कि हमारे इस मांग को हम एक भूतपूर्व सैनिकों की ओर से रिक्वेस्ट को आगे पहुंचाए, जिससे पूरा आगे की जो मिनिस्टर लोग समझे, लद्दाख को अच्छी तरह समझे और हमारे इस मांग को पूरा करने में पूरे सहयोग दें. आप रो क्यों रहे हैं? रोने अफसोस हो जाते हैं क्योंकि लोग अभी भरोसा नहीं है कब किसको क्या होगा. कोई 15 दिन, कोई 16 दिन इतने इतने बैठ करके भूख हड़ताल पे बैठे हुए, सिर्फ पानी पी रहा है, सिर्फ पानी पी करके इस तरह के बैठे हुए हैं. खुशियों से अच्छा लगा, मतलब ऐसे खुशी में बैठे हुए नहीं है. लोगों को ये जिसको चिंता है वही बैठे हुए हैं. लद्दाख की फ्यूचर को देख करके, लद्दाख की भविष्य को देख करके लोग बैठे हैं. तो वो बैठने वाले वही लोग हैं जिनको हमने कभी वोट ही नहीं दिया, जिनको हमने समझे ही नहीं. उन्होंने हमको समझा है, पूरे लद्दाख को समझा है. जबकि लोग अच्छे को ढूंढते हैं, ये बुरे को ढूंढ के कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को ये सोनम वांगचुक वगैरह इन्होंने जो है इतना शिक्षा दिया है, ये सारे भूल नहीं सकता. सर इतना अफसोस होता है, रोना तो पड़ेगा. शेड्यूल क्या 6 शेड्यूल अगर मांग रहा है तो किसी हक में कहीं लिखे हुए है, कभी संविधान में है, उस चीज़ को मांग रहा है तो उसको मानना चाहिए. One day of fast could be little overwhelming for you all. But Sonam Wangchuk had been on fast for the past 16 days. He's barely in a condition to speak. And I feel bad sitting next to him doing this interview because I know the kind of exertion he has to go through, both emotional and physical, in order to speak to me, even if couple of lines. Just a short while back, his nose was bleeding and I saw people immediately opening this umbrella to give him some shade. I don't know if I can ask you how are you, because we all know it is not easy to be on a fast for 16 days. Still, I just saw a couple of minutes back your nose was bleeding. Has the bleeding stopped? Yes, I'm okay. Sir, 16 days of fast. Your health has become fragile. Anyone can make out the physical changes that have happened. You are still determined to continue with this?
Thank you. Yes, of course, we are determined for much longer than 16 days. Why we are on this fast has a serious reason for Ladakh and for the nation. For Ladakh, it is to safeguard the fragile ecology of this very sensitive ecosystem and the unique indigenous tribal cultures that thrive here under the 6th schedule of the Indian Constitution as expected by the people and promised by the ruling party and the government. So without that, this sensitive region, both ecologically sensitive and strategically defense-wise very sensitive region, will have unrest because nothing is secure here. We have industrial lobbies and mining companies pushing from the south, capturing huge pasture lands, and we have the Chinese encroachment that's taking thousands of square kilometers of nomadic shepherds' lands. So this kind of region deserves the provision that Indian Constitution kept our forefathers back then exactly for these situations. So that's all we are hoping, that the government will keep the promises that they made to Ladakh in 2 different elections, which they won with heavy majority only because they made these promises. But later they backtracked, dilly-dallied for 4 years, and then finally clearly declined. But we still have hope that good sense and, conscience will awaken in them and they'll finally keep their promises. Thank you very much. Thank you. So I am at the moment involved in this movement to support this movement, to strengthen it. So I basically came all the way from the far-flung area, from the LOC to support this cause, because it's very evident now that post-abrogation of Article 370, the safety, security and the protection that used to be there in the Article 370, like the provision of 35A, that has not been now as of now. So Ladakh is now completely unprotected in terms of any constitutional, if we say, protection. If it allows for mining, if it allows for the outside corporates to come and exploit the nature, then there will be a mass disaster in Ladakh as well. The local ecology, as well as it will have an impact on overall the climate change. I feel that climate change and these issues has never been a political issues. If you look at even in Ladakh, in the last election, no issues was found on the basis of the climate or ecological issues. More of the issues were the local, or more of them were some social issues, or the issues which were not so relevant to the ecology. They've already kept this in their manifesto, but again they declined it, which means the government do politics on certain issues which things are important to the public, but when it comes to the actual things, when they come to the power and granting such working on such issues, then they decline. That is evident from this moment. Why is climate change not a political issue? We are knocking elections 2024, and look at those TVs, look at those channels. While they call it Battle of 2024, Clash of Titans, देश के लोग अभी तक इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है. बहुत सारे मीडिया ने दिखाए नहीं ये मुद्दा को. क्या कहेंगे देश के लोगों को? सर, इसमें भी मुझे कुछ पॉलिटिक्स ही लगता है कि दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल रियल है ना सर. इसमें तो क्या बोलूँ सर, अब मैं क्यों नहीं दिखा रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि इस चीज़ को क्यों छुपाया जा रहा है. पॉलिटिक्स ही लग रहा है सर. बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी के लेकर ही बैठे हैं.
ऐसा तो नहीं है कि मतलब कांग्रेस और बीजेपी आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक साधारण सा एक लद्दाख का मुद्दा है सर। लद्दाख अगर देश का हिस्सा है तो देश को तो लद्दाख के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना तो चाहिए ना सर, वही तो, इसीलिए तो हैरान है सर। हम तो वांगचुक के लिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए आए हैं सर, सोनम वांगचुक के सपोर्ट के लिए आए, और क्योंकि वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में अपना उतना बलिदान दे रहे हैं सर। कितने 15 दिन हो गए उनको अभी फास्टिंग करके। सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है वैसे तो। देश में एक नया नारा उठा है, शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी का सम्मान। हर कोई राजनीतिक दल उसी पे बात कर रहे हैं, नारी का सम्मान, नारी का शक्ति। इतनी सारी महिलाएं जब आज चाहे धूप हो, ठंडक हो, खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट पे उतर आए, उनका सम्मान, उनका तकलीफ चाहिए सर, ये तो ना समझना चाहिए, उन समझना चाहिए सर, ये तो समझना चाहिए। क्योंकि देखो धूप में भी बैठे हैं, बर्फ़ में भी बैठे हैं, इतने माइनस टेम्परेचर में बैठे हैं यहाँ पे धरना देने के लिए, कि पोलाइटली तरीके से यहाँ पे समर्थन सभी लोग कर रहे हैं सर। तो मुझे यही इसी बात का दुख है कि विपक्ष पार्टी या जो सत्ता में है वो इस चीज़ का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे।